ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब और केपी में इंतखाबात बाद इल्तवा केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद इस केस को सुनने से माजरत करता हूँ। बेंच टूटने के बाद आइंदा के लाया अमल के लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर में गैर रस्मी इजलास। पंजाब और केपी के इंतखाबात केस की समाअत कल 11:30 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल होंगे, जबकि अदालती अमले ने आज की समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया है। आपको बताएं कि पंजाब और केपी में इंतखाबात इल्तवा केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। और 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट, कहा 2 असम्बलियां तोड़ने से पहले तमाम आईनी माहिरीन से मशवरा किया था। आईनी माहिरीन ने बताया था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम है। बताया जाए आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन में होंगे या नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है और अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जस्टिस कादी ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। कमज़ोर और बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को जस्टिस कादी ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस कादी ईसा और उनके अहल खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। रेफरेंस नहीं था, आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई जारी थी। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि जस्टिस कादी ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाएं जो केस का हिस्सा नहीं थीं। 20 इजाफी नंबर देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल और PMDC जवाब जमा करवाएं। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक हमें गरीबों का एहसास करने का दर्स देता है। During the month of Ramadan, where as Muslims we observe or supposed to observe not only fasting and certain mandatory ritual, but also we are more supposed to think the efforts of fasting are supposed to encourage us to think about the less privileged, the bottom of the social pyramid, the poorer people who don't enjoy access to regular food, regular water, etc. And I think that's particularly poignant while we're gathered here in Islamabad with representatives from across the world, that there are people in all our societies, but particularly in Pakistan, who are facing incredibly difficult times at the moment. And absolutely, as Foreign Minister of this country, I should be able to admit, and I am ready to accept, that a lot of those difficulties are of our own making. Some mistakes that we, as the collective we, that as far as economic policy, etc., may result in. I often, in our speeches to Parliament, we refer to one of the former government's decisions. But at the same time, we're also facing, they're also facing the economic consequences of certain decisions that are also outside our control. And though that is true for people in my country, and that's true for people in your country as well. For example, we are facing the consequences of this devastating climate catastrophe, and the people who are suffering as a result of that didn't necessarily play such a role in the climate crisis that resulted in this catastrophe. That's the same for many people in your country, especially the younger generations, who are facing the consequences for decisions and actions of others. There's conflict, or there's the consequences of the COVID pandemic, which all of us are still facing today. The economic consequences of the COVID pandemic,
that has had economic consequences for my country and every single country sitting here today. And then obviously there's the heightened geopolitical context that we live in at the moment. And as a result of that, a lot of people in my country and in a lot of countries represented here today are facing the consequences of decisions that others are. The point being that, well, obviously we have to work together to address all these issues. We're reminded in this particular month that the consequences of our actions affect those that are perhaps not as empowered as we are. And therefore, when we have a responsibility or a position through which we can affect the lives of the less fortunate, it has always been our effort, and I believe it should be our collective effort, that as minimum the burden can possibly be that we place on the bottom of the pyramid. And sitting on that table over there is the Federal Minister for the Benazir Income Support Program, Ms. Shazia Mari. And I must commend and compliment her personal efforts, but obviously the efforts of her institution. कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून कहते हैं आइन के आर्टिकल 191 के ताबे पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद गिलजई। The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया। The Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 भी पास। इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। पीटीआई सेनेटर्स ने बिल की मुखालफत करते हुए शदीद एहतजाज किया। सेनेटर्स ने अदलिये पर हमला नामंजूर के नारे भी लगाए। सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया। इसी शोर शराबे में सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर बहरामंद तंगी के दरमियान हाथापाई भी हुई। अपनी निशिस्त पे चली जाएं, बाद में बात करेंगे। ये कैसी बात है डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं चलता है हाउस प्लीज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा आइन के आर्टिकल 191 के ताबे पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। सुओ मोटो के बेदरेग इस्तेमाल ने हमें अरबों रुपए के मैं अर्ज करूंगा बल्कि अरबों डॉलर्स के नुकसानात भी इस रियासत ने उठाए। पिछले दिनों में जो केसेस सेटल किए गए रिकॉर्ड डेक के, वो भी उसकी एक मिसाल है। अगर आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत करें ताकि इदारा डिलीवर कर सके। अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत ने बाकायदा मुहिम के तहत अदलिये को निशाना बनाया। ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये मफादात का बिल है। ये इनके सियासी और इनके ज़ाती मफादात का बिल है। यहाँ नैब लॉज भी इसी तरह आए थे जिसको हम NRO 2 कहते हैं। यहाँ पर EVM को भी इसी तरह इन्होंने रोन दिया था। सेनेट इजलास में वकला फलाह और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 भी कसरत राय से मंजूर किया गया। इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी नहीं हो सकती। अगले 20 दिन में ये बिल कलअदम करार दिया जाएगा। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का दावा, उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 184C में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उसके ऊपर ऑर्डर्स दे सके। हकीकत ये है कि हम दोनों का एक ही काम है, पार्लियामेंट सॉवरन है, हम कानून साजी करते हैं और जो उस कानून की तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करते हैं। और हम दोनों अदारे जो हैं उनका एक ही फ़र्ज़ है, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ लोगों तक पहुंचा सकें, जुडिशल सिस्टम को हम मजबूत कर सकें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भूंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, साबिक वज़ीर हाशिम डोगर, सफदर बुरसाल, राय मुमताज़ बाबर और नादिर दोगल ने मुलाकात की। गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधे जेल जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ज़रूर है लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। PDM हुकूमत इलेक्शन रोककर कौमी सलामती से खेल रही है।
दूसरी जानिब पंजाब में फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा खत्म कर दिया गया। पंजाब में 1158 रुपए कीमत वाले सरकारी आटे की तैयारी और फरोख्त खत्म कर दी गई। महकमा खुराक मुफ्त आटा तैयारी के लिए सरकारी गंदम की फराहमी जारी रखेगी। मुफ्त आटे की बढ़ती तलब पूरी करने के लिए फ्लावर मिल्स को ज्यादा स्टॉक बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब में फ्लावर मिल्स के सरकारी गंदम कोटा खत्म कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं रिजवान आसिफ से। जी रिजवान। जी, महकमा खुराक पंजाब ने आज से सूबे की तमाम फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटा जो खत्म कर दिया है। महकमा खुराक फ्लावर मिल्स को यौमिया 14,000 टन सरकारी गंदम जारी कर रहा था, जिससे 1,158 रुपए कीमत वाला सरकारी आटा तैयार करके वो आवाम को फराहम किया जा रहा था। महकमा खुराक की जानिब से सरकारी गंदम कोटा बंद किए जाने के बाद पूरे पंजाब में 10 किलो वाला 1,158 वाला सरकारी आटा थैला उसकी फरोख्त भी खत्म कर दी गई है। जबकि महकमा खुराक ने फ्लावर मिल्स को हदायत की है कि उनके पास जो निजी गंदम मौजूद है उससे मुफ्त आटा का स्टॉक जो है बना कर रखा जाए, क्योंकि मुफ्त आटा की जो है तैयारी और मांग उसमें इजाफा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ आपका। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।